there on your screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, this was the data which was provided to you. Now, based on different parameters, we have to we will be actually working it out for, say, first come first serve, second is earliest due date, third is shortest processing time. Okay, these are the three that we are going to look at now. Okay, now if I have to work this out, okay, say for what are the things that we need to capture? सर मतलब एक तो ड्यू डेट का हम लोग सीक्वेंस अरेंज कर सकते हैं. स्टार्ट टाइम एंड टाइम, करेक्ट? यस सर. तो उससे मालूम पड़ेगा कि वो डिले हुआ कि नहीं हुआ, बराबर ना? राइट सर, राइट. हाँ, सो प्रोसेस स्टार्ट, प्रोसेस एंड if it has delayed, then how much? Okay, so we call it as tardiness, or we can also call it as delay, correct? Yes sir. Okay, now let us start working it out. Okay, pehla wala, it will start at time t equals to 0. Process will end at what time? When it starts 20. The processing time, correct? Yes sir. So here we are doing it for FCFS. That means first come, first serve. The sequence in which they have come will be processing them in the same sequence. So yes. सर हम लोग को भी सॉल्व करना है क्या साइड बाय साइड? If you wish to, but फिर वैसे में काफी स्लो हो जाओगे. ओके सर, तो पहले हम लोग नोटिस करते हैं. हाँ, what I will do is I will show you first, then I will give you around 10 minutes time to work it out on your own. ओके सर. हाँ, नहीं तो ऐसे में फिर वो हो नहीं पाएगा. एंड द सेकेंड वन वेयर इट इज अ बिट लेंदी, लेंदी भी नहीं बोल सकते हैं, बट थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा है. सो दैट टाइम वी विल बी डूइंग इट टुगेदर. ओके, आप अपना स्क्रीन हाफ में डिवाइड करना होगा उस वक्त. एंड those who are working it on who are attending the sessions on mobile phones will have a bit of problem at that time. So वो लोग बस सिर्फ what I would say is they should just follow it, या फिर वो manually pen and paper से कर सकते हैं. Okay, and then they can practice it out on Excel later. Fine. Yes sir. So what I'm doing right now is मैंने इसका start was I'm assuming that the start is at time t equals to 0. So it will end at, since processing time is 20, so t equals to 0 plus 20, it will end at 20. Now the next process will start at 20, correct? Yes sir. हाँ, Excel में अच्छी बात क्या है कि आप formulas use कर सकते हो, तो it becomes very easy for you to just go ahead with it. Fine. So यहाँ पर आपने उसके लिए 20 हो गया. फिर 20 के बाद में when will it end? 30. So that means this start plus the processing time. So delay is, that means it will end at 30. अभी मैंने delay मैं अभी तक calculate नहीं कर रहा हूँ. We'll come to that calculation later. अब आगे का ऊपर वाला भी सेम, इसके लिए भी जॉब सी के लिए भी सेम रहेगा. प्रोसेस स्टार्ट 30. It will start at 30, बराबर.
The beauty with Excel is I can just simply pull this down and I will get the values for them because I have already used formulas. अब आप समझ रहे हो why do I recommend Excel to be worked out? यही अगर आप मैनुअल कर रहे होते तो हर एक कैलकुलेशन करते थे, करेक्ट? Yes, sir. And when you are not doing it manually, a lot of things can be just done by pulling the, or rather just copying the formulas. Fine. Now let us look at delay. Delay would be if I am missing the deadline and if I am missing it by how many days. Correct? So एक तरह से देखा जाए तो मेरा जो भी ड्यू डेट है उससे मैंने कितना मिस किया. Yes, sir. करेक्ट ना? Right. हाँ. So यहाँ पर in the first case is there any delay? No, sir. No. Yes, sir. But in the second case there is a delay, है ना? तो Yes. यहाँ पर के लिए एक तरह से देखा तो I can just simply put up a formula. Okay. अब मुझे डिले भी ऐसे अगर मैं देखूंगा फॉर्मूला अगर मैं डालता हूं so it will give me, sorry, equals to this divided by this minus your due date. So 15 days delay. Same formula I could have used here also. So there it is 0, here it is 15, and if I pull it, correct? So what is my total delay? Summation of all the 70. all the things. Yes, sir. So equals to sum करके आप लिखोगे, Yes, sir. correct? Excel में there is a shortcut key. Left side का Alt and ऊपर जो equals to और plus वाला बटन रहता है ना, if you press both. Oh, अच्छा. आ गया? Immediately you get those values. So Alt plus? Alt and then we have to press plus, but कौन सा वो जो ऊपर जो नंबर लाइन रहता है ना, हाँ. उधर पर जो प्लस है वो नंबर वाला कीपैड में से प्लस नहीं. हाँ सर समझा. Yes, sir. वो प्लस में देखो साथ में इक्वल्स टू भी बना रहता है. Yes, sir. हाँ, so if you press alt equals to, that is alt plus, तो वो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला डाल देता है. फाइन. ठीक है, sir. This gives me an total delay. बट हमको क्या चाहिए था? हमको एक्चुअली में एवरेज चाहिए था. ठीक है, सो हम इसको इक्वल्स टू एवरेज भी ले सकते थे. एवरेज डिले कितना हुआ, टोटल डिले कितना हुआ, आपको वॉट एवर दैट इज रिक्वायर्ड. ओके, इट कैन बी डन दैट वे. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Now coming to, if I have to do the same thing again, okay, for say EDD, and मेरा ये इतना पार्ट तो सेम ही रहेगा, बट उसकी जगह पर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू जस्ट कॉपी द हेडर्स. ओके, ये जो काम मैं शायद पहले भी कर सकता था जो मैंने अभी गड़बड़ किया. नाउ व्हाट आई कुड हैव डन इज, यही सेम FCFS में ही आई कैन डू द चेंजेस एंड आई शुड बी डूइंग ओनली जस्ट चेंजिंग दिस थिंग. ओके, सिर्फ सीक्वेंस मुझे बदलना चाहिए था. तो दैट वे आई वुड हैव बीन एबल टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ माइंड. सो अभी क्या करने का, मेरे को इसको कैसे चेंज करना पड़ेगा? इक्वल्स टू वी लुकअप, दिस वैल्यू is to be looked in, this is my data table. Okay, freeze it because I am going to pull the formula down. Okay, उसको कॉपी करके लूंगा, कॉमा,
नाउ कॉलम इंडेक्स नंबर, आपका प्रोसेसिंग टाइम कौन से कॉलम में है? सेकंड कॉलम में. So put 2 comma, it has to be an exact match, so choose exact match. Okay, automatically it will type it as false. आप इसकी जगह पर false की जगह पर 0 भी लिख सकते हो और true के लिए 1 लिख सकते हो. ठीक है, close the bracket, enter. Now if I pull this down, हर एक का अपने आप यही सेम वैल्यू रहेगा. और यहां पर अगर मान लो मैंने इसको 20 किया, सो देखिए नीचे भी वो 20 हो जाता है. उसको वापस 10 किया तो फिर से 10 हो जाएगा. सो सिंस यू आर यूजिंग अ VLOOKUP फॉर्मूला, ऑटोमेटिकली it will become dynamic. And now the other thing that I need to do is for due date. So I need to do the same way for due date also. So अगर ड्यू डेट के लिए करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? फॉर्मूला इक्वल्स टू V lookup what? Lookup first column 1 value, that is the job name, comma my table array. ये जो ऊपर वाला जो टेबल है सेम, I will be freezing it by pressing F4. You can freeze it. You can see the dollar symbols coming in the minute you press F4. Yes. Yes, sir. Huh? Okay. Once you have done that, then comma, we need to identify the column from where I will be getting the due dates. So due date मेरा कौन से column में है? Column number 3. So 3, comma, false. It has to be an exact match. So false. You can close the bracket or simply press enter. It will automatically close the bracket. And just drag this formula below also. Fine. Once I have done, now let me see FCFS. For FCFS, the sequence is A, B, C, D. Correct? But for EDD, the sequence would be different. Earliest due date. What is my earliest due date? पहला earliest due date के हिसाब से first would be B. Second, A. Third, D. And then fourth, C. Okay. So now all that I need to do here is B, A, D, C. हो गया सब काम पूरा? Now here the average value that I am going to get would be slightly wrong. Why? Because I am getting a negative value here. So that means इधर पर का मेरा फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होना चाहिए था. कुछ ऐसा होना चाहिए था कि it should have been always a positive value or nil value. Blank. Correct? बराबर ना? Yes, sir. So यहाँ पर या तो आप उसको इग्नोर कर दो, डिलीट कर दो. हाँ, डिलीट करोगे तो आपका एवरेज वैल्यू देखो उस हिसाब से चेंज हो जाता है. बट अगर डिलीट कर देते हो तो आपका फॉर्मूला सब पूरा मतलब ये चेंज हो जाता है. सो इसको आप फॉर्मूला से भी हटा सकते हो. यू कैन से इफ दिस वैल्यू is less than 0, that means if it is a negative value, put blank, else E8 minus C8. Close the bracket, enter. Now if I pull this formula even below also, it has taken care of everything.
Yes, sir. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Now, EDD के हिसाब से it is BADC. What about SPT? That is shortest processing time. What would be my sequence? B D A C. Sorry? B D It would be B, B A C B, D, A C A, C. C. Okay. So all I need to do is B तो already है इधर पर, D, A. हो गया सब बराबर? Yes, sir. अब सोचिए अगर हम लोग मैनुअली पूरा एक एक टेबल बना रहे होते और एक एक लिख रहे होते तो भी इतने टाइम में खत्म नहीं हुआ होता. Yes, sir. Now if I have to also find out, this is my average delay. Okay, so if I also have to find out the number of this thing, number of activities which have got delayed, so equals to count करेक्ट. अब मैं इधर पर अलग अलग सीक्वेंस भी अगर मैं डाल दूं तो भी स्टिल मुझे फटाक से मिल जाएगा. अब इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? यहाँ पर एक्चुअली 3 ही डिले हुआ बट एक 0 है. Right, sir. अपने को फिर काउंट इफ यूज करना पड़ेगा. इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 0. आप समझ रहे हो किस तरह से आपका पूरा इवॉल्व होता है? हाँ सर. Sir. हाँ? Yes, sir. So Yes, sir. this is how you actually work around when you are working with Excel. I hope it was not too fast. No, sir. No, sir. Sir, it's okay. Comfortable? Can we move on? Yes, sir. Yes, अभी sir. नेक्स्ट में मेरे को सिर्फ अगर कुछ भी दूसरा रूल रहेगा, मान लो प्रायोरिटी का हो गया या अर्जेंसी का हो गया, यहाँ पर ही मेरे को एक और चीज दिया हुआ है कि प्रायोरिटी. ओके, सो प्रायोरिटी में से दिस इज थर्ड प्रायोरिटी, दिस इज सेकंड, दिस इज फोर्थ, दिस इज 1. तो मेरे को प्रायोरिटी शेड्यूलिंग करनी है. तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के हिसाब से it would be D, B, A, C. So all I need to do is just for priority scheduling, it would be D, B, A, C. So all I need to do is D, B, A, C. Correct? Clear? सर Yes, sir. प्रायोरिटी नहीं समझा. हेलो. प्रायोरिटी नहीं समझा सर. देखो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग अभी इसमें मैंने आपको 3 मैंने बताया कि यार फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गया, अर्लीस्ट ड्यू डेट हो गया और एसपीटी इज शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम. अब इसी में प्रायोरिटी भी हो सकता है. प्रायोरिटी में मान लो ये 4 कस्टमर्स हैं बट एक का एकदम अर्जेंट है, दूसरे को उसके बाद में करेंगे, तीसरे को उसके बाद में करेंगे, या फिर 2 मिनट के लिए मान के चलो कि आपका एकदम खास फ्रेंड का उसका ऑर्डर है, एक वीआईपी का ऑर्डर है, एक पुलिस वाले का ऑर्डर है.
और एक प्रोफेसर हीरेंद्र सोनी का ऑर्डर है. Now how will you prioritize? Since you are undergoing the course right now, so Professor Hirendra Soni becomes the first priority. Yes. Correct? But Yes, sir. अगर Professor Hirendra Soni अच्छा नहीं लगता है, so will he be the priority? No. No. Then last priority. Okay. So that is how you define. अभी इसी में मैं अगर since the session is getting recorded, अब इसमें ऐसे कुछ बोलने में थोड़ा सा दिक्कत है, but 2 मिनट के लिए समझो. You already have some of the jobs in hand और उसमें से एक बंदी आपकी गर्लफ्रेंड है. अब उसका प्रायोरिटी किधर आएगा? फर्स्ट. दूसरी प्रोस्पेक्टिव गर्लफ्रेंड है, उसका प्रायोरिटी किधर आएगा? सेकंड. ओके. अब तुम्हारी मम्मी का एक काम आ गया, अब ये प्रायोरिटी किधर आएगा? फर्स्ट. अब भी आंसर दिया हो मत, अपने सारे प्रोस्पेक्ट्स खत्म कर दोगे अगर तुमने आंसर दिया तो. करेक्ट ना? सर फर्स्ट. First. Yes, sir. Now what is happening is your earlier priority has changed. The one which was at number 1 has basically shifted to number 2. So at runtime also there is a possibility that priorities may change. अब आप 2 मिनट के लिए सोचो, एक हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठा हुआ है, वो लोगों को, पेशेंट्स को एक एक करके ले रहा है, बट देयर इज एन इमरजेंसी केस कमिंग अप. व्हाट डू वी डू? We take the emergency. We take the- The doctor will take the emergency. तो आप अपना शेड्यूलिंग रूल चेंज करते हो, तब थोड़ी देर के लिए शिफ्ट ओवर टू समथिंग एल्स एंड देन अगेन यू कम बैक. करेक्ट? Yes, sir. यहीं पर अगर आप 2 मिनट के लिए समझो कि आपको 4 काम करने हैं, उसमें से 2 काम ऐसे हैं जो कि मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, बट वो सबसे पहले काम नहीं आए थे, तो व्हाट विल यू डू? ये 2 मिनट वाले खत्म कर देते हैं. करेक्ट? Yes, sir. So that is shortest processing. So this is how you will find application of different priority rules in your own life itself, and then you can reprioritize. But with this tool you will come to know even beforehand कि भाई कितना टाइम लगेगा, कितना डिले हो सकता है, and then accordingly you can plan for the repercussions. Done? Yes, sir. Yeah, very good. Now we'll move over to सर तो the यहाँ पे कैसे समझा प्रायोरिटी बेसिस में, लाइक यहाँ पे कैसे जजमेंट किया फिर डीवीएसी करना है? यहाँ पर मैंने मतलब आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, मैंने ये जो रैंडमली डिफाइन किया ना प्रायोरिटी, वो दिया हुआ था. अब इसमें रियल लाइफ सिचुएशन में क्या होगा मालूम है? यू मे कम अक्रॉस अ कपल ऑफ जॉब्स व्हिच मे हैव द सेम प्रायोरिटी. सो फिर आप फर्स्ट कम Okay, फर्स्ट sir. सर्व, वहां पर जब टाई वाला सिचुएशन आएगा देन यू विल अप्लाई एन अनदर रूल, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. Ultimately what you are supposed to do is you need to define a schedule, a sequence, in which sequence you will take them up for processing, और उसके बाद में उसके हिसाब से you will work out कि भाई कितने टाइम में मेरा काम खत्म हो जाएगा, उसमें से कितने जॉब्स डिले हो सकते हैं. This is planning. ओके. अब इसमें क्या हो रहा है कि एक केस में, एक टाइप ऑफ शेड्यूलिंग में मेरे 3 जॉब्स डिले हो रहे हैं, एवरेज डिले 20 है, बट वहीं पर मैं जब इसके हिसाब से चल रहा था, सो आई वाज getting 3 jobs getting delayed, but my average delay was 17.5, which was definitely better. अब इसमें मैं एक और करता हूं से ये वाला एसपीटी वाला ले लेते हैं. एसपीटी वाले के हिसाब से इट विल बी बी डी ए सी.
So now only 2 jobs are getting delayed, but the average delay has increased. Okay. So अभी 2 मिनट के लिए सोचिए कि you are the scheduling manager and you are being evaluated based on कितने jobs तुम्हारे डिले हुए, कितने jobs आपने टाइम पर सबमिट नहीं किया. So definitely then I will go for SPT. क्यों? सिर्फ क्वांटिटी देख रहे हैं ना. यस सर. तो इसमें सिर्फ 2 ही जॉब्स डिले हो रहे हैं. बट वहीं पर अगर मैं इफ आई गो फॉर से एसपी ईडीडी के हिसाब से, सो बी ए डी सी, सो 3 जॉब्स डिले हो रहा है 16.67. अब एबीसीडी के हिसाब से देखते हैं. सो 17.5. तो इसके पहले वाला ज्यादा बेटर था ना. यस सर. एवरेज टाइम कम. Yes, sir. Time was less. So depending upon what is more crucial, you decide what sequence you should follow. Okay. यस सर. Yes, sir. ठीक है. इसमें ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है. सिर्फ जो लॉजिक है वो तो इजी था, बट जो मैं साथ में जो एक्सेल में जिस तरह से यूज कर रहा था, दैट इज समथिंग विच आपको धीरे धीरे वर्कआउट करना पड़ेगा. मुझे नहीं लगता कि आप में से सब लोग एक्सेल इतना ज्यादा यूज कर रहे होंगे, और अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. सर ये सम आप बाद में सेंड कर सकते हो क्या? ये एक्सेल शीट आप बाद टीम से पोस्ट कर सकते हो क्या? हाँ, मैं पोस्ट कर सकता हूँ, बट मैं नॉर्मली ना स्टूडेंट्स को खुद से करने के लिए बोलता हूँ. क्योंकि क्या होता है मालूम है, अगर मैं आपको यही सेम दे दूंगा ना, तो you will follow the same method that I am doing it. You will not try and explore. और learning कब होती है? When you try and explore. फाइन सर. आपको चाहिए तो मैं अलग से साथ में बैठने को तैयार हूँ. हम लोग और अलग से और ट्राई कर सकते हैं. बट रिक्वेस्ट इफ यू कैन ट्राई एंड एक्सप्लोर ऑन योर ओन. नॉर्मली अगर आप मुझे पूछो तो मैं ये सब करने के बाद में ना, आई डोंट सेव दीज शीट्स, बट इफ यू वांट आई कैन सेव एंड आई कैन शेयर इट. बट फिर वैसे में ना आप खुद से करोगे नहीं, एंड योर थॉट प्रोसेस विल गेट बाइंडेड ओनली जस्ट टू द मेथड दैट आई शो यू. ओके सर, नो प्रॉब्लम. हाँ, तो क्रिएटिवली मैं ये मानता हूँ आपका क्रिएटिविटी एस्पेक्ट तब इम्प्रूव होगा जब आप खुद से करोगे, अपना दिमाग लगाओगे. मैं चाहिए तो कुछ समय बाद में शेयर कर दूंगा. यस सर. यस. हाँ, Yes, sir. क्योंकि मैं ना नॉर्मली आप देखोगे ये अनसेव्ड फाइल है जो मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ. आई नॉर्मली डोंट सेव इट. सेव कर दूंगा तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, मैं फिर कामचोर हो जाऊंगा. मैं ये ना तुम लोगों को, जैसा मैंने उस दिन टाइम कम था तो मैंने आप लोगों को सीधा बस सिर्फ पीपीटी में ही दिखा करके काम खत्म कर दिया ना. You would have Yes, sir. understood it better today as compared to that day. Yes, sir. है ना? So this is the reason I don't want to become आलसी. ओके सर. बस मारामारी करते हैं. If required, मैं फिर बाद में ये सेव करके आपको दे दूंगा. फाइन. थोड़ा सा चैलेंज है ना एक्सेल, इसके लिए मैंने बोला, बाकी कुछ नहीं. और वीडियो के साथ में कोशिश करो, हाथ पैर मारो, सोचो कि मेरा कम से कम काम होना चाहिए. अभी जैसे मैं इधर पर सिर्फ शेड्यूल में चेंज करने का काम कर रहा हूँ, ठीक है. आई कैन गो टू अनदर लेवल wherein I will only just choose a number for different rules. या फिर आप बस सिर्फ जस्ट वो नंबर्स चूज करोगे और वो ऑटोमेटिकली पूरा इधर पर का सीक्वेंस वगैरह सब कुछ चेंज करेगा. आप वो कर सकते हैं. ओके सर. Okay, sir.
ये सब ना हम लोग एक्चुअली जब हम एक्सेल शीट मॉडलिंग में जाते हैं ना, तो वहां पर आपको सब सीखने को मिलता है. फाइन. यस सर. जस्ट अ मिनट, मेरा सिस्टम थोड़ा सा कुछ तो एराटिकली बिहेव कर रहा है. जस्ट अ मिनट. जस्ट अ मिनट. Fine. Can we move on now? Yes sir. Yes, sir. Let me reshare the PPT. Is my PPT visible? मूड हो रहा है सर. एक सेकंड लग. अभी भी लोड. इज इट विजिबल? नो सर. लोडिंग हो रहा है. अरे यार क्या हो गया एक अचानक. 1 second, let me see. अब ये Yes, visible yes. है. Hello. Has my screen loaded? Yes sir. Yes. अरे सबसे मैं म्यूट करके ही बोल रहा था. Sorry.
Okay. Now this is what we have done, okay, earlier. Yes, sir. Now coming to this was actually applicable for a single stage processing, that is one stage only, okay, single resource. In reality, you will come across two resource also. So we'll take up something on that. But whenever you have two or multiple resources, so two resources ke liye you have a method called as Johnson's rule, which we use. It has got certain rules which, if it is followed, then only if those conditions are satisfied, then only then only the Johnson's rule can be actually applied. Okay, for three resource scheduling. Other than that, the other method is either we go for simulation or we go in for linear programming. Okay, any doubts there? No, sir. Hello. Yes, sir. So we are seeing this slide only. So single resource, two resource, and then simulation is another thing which we normally use. Simulation आप लोगों सब लोगों को पता ही है already. वो वीडियो गेम्स खेलता है ना, PUBG. Yes, sir. Yes, sir. सिमुलेशन क्लास के अंदर बैठ के क्रिकेट खेला है लेक्चर के टाइम पे? No, sir. नहीं सर। अरे क्या बात कर रहा है, वो टेक्स्ट बुक में से पेजेस फ्लिप करके उसमें पेज नंबर्स के हिसाब से Yes, हाँ, sir. बुक क्रिएट खेला है सर। खेला है ना, दैट्स सिमुलेशन. ओके. Okay, और sir. अभी ऑनलाइन चालू करके दूसरा जो गेम खेल रहा होगा, दैट्स नॉट सिमुलेशन. Fine. So simulation is, it only just simulates. It doesn't actually happens. Okay. So you just try and simulate different scenarios and check how the system will behave. So वो next term में हम लोग जब OR करेंगे, that time we will see simulation also. Okay, sir. ये सब ज्ञान की बातें आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना. What I would suggest is, ये तो हम लोगों ने कर लिया था ना लास्ट टाइम. Sir, हाँ, शेड्यूल. अभी ये हम लोगों को करने का है. ये ज्ञान का सब कुछ आप पढ़ लेना, कोई नॉट अ बिग डील. Okay, Okay. sir. Now, when we have to schedule for two stage, let us say there is an example wherein we have to say produce or manufacture 7 types of books, and for every type, okay, say type 1 is going to go through two stages. One, first it would be printed and then it would be binded. So पहले printing होगा फिर binding होगा. ठीक है. So Yes, sir. अब मेरे को यहाँ ये मालूम लगना है कि हर एक के लिए टाइम, इसके लिए 20 आवर्स लगेगा, इसके लिए 25 आवर्स लगेगा फॉर बुक 2 90 आवर्स 60 आवर्स, बुक 3 80 आवर्स 75 आवर्स, बुक 4 20 30 आवर्स. करेक्ट. नाउ व्हाट शुड बी माय सीक्वेंस? अभी पहले जो भी हम एसपीटी ईडीडी कर रहे थे, यहाँ पर हम वो सब नहीं कर सकते हैं. करेक्ट. मुझे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सब पूरा खत्म करना है. सो what is the best method of doing it? How should we schedule it? Any idea? कुछ किया है कुछ लोगों ने एमबीए में, वो अपना बीएमएस में? BMS guys to the rescue. कोई भी BMS वाला नहीं है? Okay, what we will do is we will do this one now.
I'm just copying the table because this is what is required, and we will again go back to our Excel sheet. I'm just pasting it here. Fine. Looks good. Yes, sir. Would you all like to do it along with me? Definitely, sir. चलो करेंगे. So just give us 2 minutes, so we will copy the table. Done, sir. What about Yes, sir. Done. So I need to now follow something called as Johnson's rule. It would be very helpful if I go with that. So I say job sequence. We'll identify what job sequence we should follow, और उसके लिए मैंने जस्ट ये बनाया कि what is the sequence that should be the best. Now
according to Johnson's rule, we will schedule the job which is going to take the least time. Okay. So अभी least time इधर पर कौन सा ले रहा है? सर किसमें, प्रिंटिंग या बाइंडिंग? इनमें कौन दोनों मिला करके या एक ही किसी भी एक इसमें? So what we do is we identify the least time out of all पूरे इसमें. So A1 first. ए ले रहा है Least 45 A is 45, 15 ले रहा है. 660. 15. That is job 6. Yes. And this is stage 1. So stage 1 में job 6 is going to take 15. तो जो भी सबसे कम लेने वाला है, अगर वो stage 1 पे है तो उसको पहले शेड्यूल करो. अगर stage 2 पे होता तो उसको लास्ट में शेड्यूल करते थे. Clear? Okay. I repeat the rule. Identify the least value. Okay. उसमें से फिर वो जहां भी अगर if it is in at the stage 1, then schedule the job early. If it is at stage 2, schedule the job as late as possible. So since this is at the first stage itself, okay, so this is job 6, तो उसको मैं सबसे पहले शेड्यूल करूंगा. So 6. Correct? Right, sir. Once I have already scheduled it, let us ignore this one. So उसको मैं just yellow color कर देता हूं ताकि मुझे पता है कि अब इसको मुझे नहीं देखना है. Now what is the least value? 1, that is 20. 20. So यहाँ भी है और यहाँ भी है 1 as well as 4. So I can take either of them. But दोनों भी stage 1 में है. So that means if I take 1 here, then I will have to take 4 here. Correct? Or the alternate Yes. way is 4 and then 1. Correct? Right, sir. Okay. यस सर. तो अब मेरा 1 और 4 भी हट जाएगा. What is the next least value? 7 7. Job number 7, 50. But this is at second stage. 50 is at the second stage. So that means this has to be scheduled at the end. So that means यहाँ पर it would be 7. And I will just discard this also now. यहाँ तक clear है? हाँ sir. हाँ सर. Now, next list value out of uncovered ones, 120, 90, 80, 75, 90 and 60. So 60 is the least value. This is again at second stage. So that means 2. पीछे की तरफ शेड्यूल करेंगे. क्लियर है? Yes, sir. यस सर. अब इसके बाद में नेक्स्ट लिस्ट वैल्यू 75. तो इसको कहां पर शेड्यूल करेंगे? राइट साइड पे 2 के बाजू में. हाँ, so we'll have 3 here. After that only one job is left out. So simply put that thing there. So now we have 2 schedules, 6, 1, 4, 6, 4, 1, 5, 3, 2, 7. So we have job sequence 1 and then we have job sequence 2. Clear? हमारे पास में 2 possible solutions हैं. Fine? यस सर. Yes, sir. Now, let us start working around. अभी हम इसका देखते हैं, टाइम कैलकुलेशन करके देखेंगे. सच में टोटल प्रोसेसिंग टाइम
कम होता है कि नहीं होता है, और कौन सा वाला बेटर है, जॉब सीक्वेंस 1 या जॉब सीक्वेंस 2. So to check this, what we'll do is we need to know first stage का processing start time, processing end time, second stage का start time, end time. Now if we also want to check the performance of the system in terms of resource utilization, so we also need to capture मेरा फर्स्ट स्टेज आइडल था क्या, सेकंड स्टेज आइडल था क्या, और मेरा जॉब को कहीं पर वेट करना पड़ा. Job is nothing but actually a customer. So was my customer required to wait somewhere? So अब उस हिसाब से we will start having a new table. So it is job, पहले हमने जो भी आइडेंटिफाई किया उसके हिसाब से सिर्फ हम ना टेबल का हेडर्स लिखेंगे. ओके, लॉजिकल है सब पूरा. हेडर्स याद करने की जरूरत है क्या? नहीं लगता सर. नो कमेंट. नहीं लगता सर याद करने. ओके, तो अब मुझे यहाँ पे क्या लगेगा, जॉब स्टार्ट नहीं सर, पहला स्टेज 1 स्टार्ट. स्टेज 1 क्या है? प्रिंटिंग. प्रिंटिंग स्टार्ट, प्रिंटिंग प्रोसेसिंग टाइम और प्रिंटिंग प्रोसेस, एंड देन प्रिंटिंग एंड. Similarly, binding start, binding process, binding end. फिर उसके बाद में प्रिंटिंग मशीन आइडल, बाइंडिंग मशीन आइडल, जॉब आइडल. आइडल मतलब ये वेट कर रहा है. करेक्ट. फाइन यहाँ तक? Yes, sir. Bravo. ठीक है. सर एक 2 अभी मिनट हम कॉपी कर. हाँ? एक 2 Sorry? मिनट रुकिए, जस्ट कॉपी करें टेबल. हाँ टेबल लिख. हाँ, टेबल लिख लीजिए. आपको लॉजिक समझा ना टेबल का? सर एक बार बता दीजिएगा फिर से प्लीज. हाँ, देखो पहला स्टेज क्या है आपका? प्रिंटिंग. तो प्रिंटिंग का स्टार्ट, प्रोसेसिंग के लिए कितना टाइम लगा, फिर प्रिंटिंग का एंड. फिर दूसरा स्टेज बाइंडिंग. तो बाइंडिंग का स्टार्ट, उसका प्रोसेसिंग और फिर एंड. उसके बाद में प्रिंटिंग मशीन कितना देर आइडल था, बाइंडिंग मशीन कितना देर आइडल था, और जॉब मेरा कितना देर आइडल, या ये बोलना चाहिए कि आइडल और वेटिंग. ठीक है, पूरा लॉजिकल है. आपको उसको मतलब ऐसे याद करने की जरूरत नहीं, आप अपने हिसाब से कुछ अलग भी कर सकते हो. सर लास्ट वाला क्या है? जॉब आइडल और जॉब आइडल और वेटिंग. Waiting. Done, sir.
Done, sir. Done? Yes, sir. चलो, let's move on. ओके, अभी हम पहला सीक्वेंस चाहिए तो ले लेते हैं, ये वाला। इसको सिंपली कॉपी करके जब यहाँ पर पेस्ट करना है ना, so there is something called as paste special. Go to paste special and you can transpose it. अगर वो भी मतलब डायरेक्ट आप ऐसे ही इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो अपने आप आ जाता है वो बराबर। ठीक है, डन। Yes, sir. सो नाउ आई हैव अ सीक्वेंस देयर। अब कुछ चीजें मुझे मालूम है, जैसे प्रिंटिंग प्रोसेसिंग का टाइम है, फिर बाइंडिंग प्रोसेसिंग का टाइम है। ओके, चाहता तो मैं ये टेबल को ऐसे ट्रांसपोज फॉर्म में रखता तो इट वुड हैव बीन इजी एंड आई कुड हैव यूज्ड द अर्लियर फार्मूला इटसेल्फ, वी लुकअप, क्योंकि मुझे प्रोसेसिंग टाइम चाहिए होगा ना, प्रिंटिंग का प्रोसेसिंग टाइम। अभी जॉब 6 का मेरा प्रोसेसिंग टाइम कितना है? 15, करेक्ट? Yes, sir. हाँ, तो या तो मैं मैनुअली लिखूं या मैं सीधा फॉर्मूला को यूज करूं तो ज्यादा अच्छा है। बट पहले हमने वी लुकअप लिया था क्योंकि उस वक्त टेबल हेडर्स इधर ऊपर थे, करेक्ट? अभी टेबल हेडर्स इधर साइड में है, सो हम इंस्टेड ऑफ वी लुकअप वी विल यूज एच लुकअप। सी, मैं ना जानबूझ के अलग अलग मेथड्स यूज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को हर एक का एप्लीकेशन दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, पहले वाले एग्जांपल में वी लुकअप भी आपका साथ में कवर हो जाता है, ये वाले में एच लुकअप कवर हो जाएगा। इसको भी चाहो तो वी लुकअप से कर सकते हो, बट उसमें टेबल को अपने को उल्टा करना पड़ेगा। Right, sir. ठीक है, सो मैं जानबूझ के दूसरा वाला यूज कर रहा हूं ताकि आपको सभी चीज में थॉरो हो जाओ। आप इनके बिना आप लाइफ नहीं सोच सकते हो। वी लुकअप, एच लुकअप, पिवट टेबल, ये जिंदगी है हर एक की। ठीक है, वो कई बार लोग इवन ये भी बोलते हैं ना कि पूरा टाइम बचपन से हम इतना सब पढ़ते आए और अभी हम कर क्या रहे हैं, वी लुकअप, एच लुकअप, ऐसा सब कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा न्यूमेरिकल खत्म करने के बाद में दे विल टेक अ ब्रेक। ओके, हेलो, हाँ सर, क्या आवाज चली गई थी? हाँ हाँ, अपना ये पूरा खत्म ये वाला न्यूमेरिकल पूरा हो जाएगा, देन ओनली वी विल टेक। अभी बीच में नहीं लेते हैं प्लीज। हाँ Yes, sir. Yes, Yes, sir. चलेगा सर। हाँ, सो नाउ अभी मेरा स्टार्टिंग विल बी डेफिनेटली एट t इक्वल्स टू 0, करेक्ट? इसको सबको सेंटर अलाइन कर देता Yes, हूँ तो sir. मेरे को जरा देखने में अच्छा लगेगा। अब मेरा प्रोसेसिंग टाइम क्या रहेगा? पहले जॉब 6 के लिए देखना है, इक्वल्स टू एच लुकअप दिस वैल्यू इन विच टेबल, लुकअप दैट इन दिस टेबल, ये ऊपर वाला टेबल। वी लुकअप में क्या होता था, पहले लेफ्ट साइड के कॉलम में वो चेक करता है। एच लुकअप में क्या होगा, सबसे ऊपर वाले रो में। ठीक है, सो लुकअप फॉर 6, अभी इसको फ्रीज करता हूं। हाँ, लुकअप फॉर 6 इन दिस टेबल, कॉमा, अब इसको वैल्यू कौन से रो से लेना है? प्रिंटिंग का वैल्यूज अपना कौन सा रो में दिया है? सेकंड रो में। Second. तो it has to take up values from the second row and it has to, वो अगर 6 है तो इधर भी 6 है तो ही वैल्यू ले। false. So exact, that means false. Clear? Enter. इसका फायदा क्या हो गया?
इसको मैं जस्ट पुल कर लूंगा, मेरे को सभी की वैल्यूज बराबर से मिल जाएगी। डन। जस्ट अ मिनट। हाँ, नहीं तो आप अगर मैनुअली कर रहे होते तो एक एक आप लिखते थे देख करके। यस सर, हो गया। ठीक है, अब एंडिंग टाइम कैसे होगा? इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस प्रोसेसिंग, करेक्ट? बराबर है। यस। अब नेक्स्ट बाइंडिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होगा? ये प्रिंटिंग प्रोसेस खत्म होगा। यस सर। So that means it will depend on this value. यस सर। बाइंडिंग प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा, कैसे मालूम करना है? स्टार्ट प्लस, सॉरी सर, वो जॉब सीक्वेंस है। वापस से हम लोग एच लुकअप करके ऊपर के वैल्यू ले लेंगे टेबल से ही, है ना? दिस इज जॉब 6। यस सर। जॉब 6 को प्रिंटिंग के लिए कितना टाइम लगा? प्रिंटिंग के लिए 15 लगा, बाइंडिंग के लिए 35 लगता है, तो मतलब ये प्रोसेस के लिए 35 आना चाहिए, बराबर? यस सर। यस सर। So equals to h lookup what? H lookup this value into ये पूरा टेबल फ्रीज कर दो ताकि मैं फॉर्मूला जब नीचे खींचूं तो भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी मैं कौन से रो से वैल्यू लूंगा? रो नंबर 3। Will it be approximate exact match? False, ठीक है, एंटर। मिला मुझे 35 बराबर। आप चाहो तो बाकियों के लिए भी ऐसे ही पुल करके ले लो, तो उसका भी वैल्यूज अपने आप पहले ही आ जाता है। रैंडमली एक दो चेक कर लेने का, तो अपने को श्योर हो जाता है कि हमने जो भी किया। ओके, अब यस आपका सर। प्रोसेस कब खत्म होगा? जब एट 15 35 only, 35 प्लस 15 15 है ना? सो इक्वल्स टू ये स्टार्टिंग टाइम प्लस processing time, that will be ending time. Was my machine, printing machine, idle at any point of time? Since it was the first stage, first machine, पहला जब आया आते ही उस पे लग गया, correct? So there was no idle time. तो हम एक तरह से देखेंगे तो ये जो starting time था उसी वक्त से शुरू हो गया, तो there was no idle time, तो 0, correct? यस सर। अब बाइंडिंग मशीन के लिए was there any idle time? यस सर, 15। तो जब तक 15 नहीं हुआ तब तक बाइंडिंग मशीन मेरा आइडल था, सो 15। Was there any job waiting? 15 कौन सा लिया आपने? एंड का, स्टार्ट का ना? स्टार्ट का। Was my job waiting? Job waiting is difference between second stage processing and first stage completion, correct? So that Yes, sir. means
second stage processing was at 15 and first stage completion was 15. तो यहाँ पर जॉब मेरा जरा भी वेट नहीं किया. So आप उसको सीधा this 15 minus this 15 करके रखेंगे तो बराबर आ जाएगा. करेक्ट? यस सर. ठीक है. अब मेरा नेक्स्ट जॉब 1 वो कब शुरू होगा प्रिंटिंग के लिए? फिफ्टीन के बाद. जब मेरा प्रिंटिंग मशीन आइडल हो जाएगा. प्रिंटिंग मशीन कब आइडल होगा? जब पहला वाला जॉब प्रिंटिंग का खत्म हो गया. तो मतलब अभी ये 15 पर चालू होगा. इक्वल्स टू दिस 15. बराबर? यस सर. एंड कब होगा? स्टार्ट टाइम प्लस प्रोसेसिंग टाइम. करेक्ट? सो 15 प्लस 20 बराबर ना? हाँ. यस सर. तो इक्वल्स टू 15 प्लस 20. अब मेरा ये वाला सेकंड जॉब बाइंडिंग के लिए कब जाएगा? प्रिंटिंग के बाद. प्रिंटिंग के बाद. प्रिंटिंग के 35 पे. बाद पर वो खाली हो गया. प्रिंटिंग खत्म हो गया. बाइंडिंग के लिए जाता है. बट बाइंडिंग वाला पहला वाला जो जॉब बाइंडिंग हो रहा है वो तो 50 पर खत्म होगा. राइट. राइट तो सर. ये वाला जॉब का बाइंडिंग कब शुरू होगा? 50. 35. है ना? 50 पे चालू होगा क्योंकि दूसरा मशीन 35 पे तो खाली ही नहीं है ना, बिजी है वो. यस सर. राइट. है ना? तो मतलब कि अगर अभी 2 मिनट के लिए मानो ये 50 की जगह पर मान लो 25 पर खत्म हो जाता. हाँ, 35. तो फिर 35 35 शुरू होता. करेक्ट? सो इसका मतलब ये है कि वी कैन यूज अ फॉर्मूला कॉल्ड एज मैक्सिमम ऑफ एंडिंग ऑफ दिस साइकिल और प्रिंटिंग का. बराबर? ऑटोमेटिकली वो 50 लेगा. से मैंने फॉर्मूला दिखाई ना. मैक्सिमम ऑफ end of binding process of the previous job and end of the printing of the current job. ओके सर. क्लियर है? मैनुअली करना हो तो फॉर्मूला कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इतना तो लॉजिकल है. करेक्ट ना? सर अपने यहाँ पे इफ भी यूज Yes. कर सकते हो ना? हाँ सॉरी, इफ भी यूज कर सकते हो ना? इफ फंक्शन. हाँ इफ फंक्शन भी यूज कर सकता है. बट इफ फंक्शन वगैरह में क्या होता है, फिर इफ फंक्शन ना कॉम्प्लिकेटेड रहता है. कई बार ना लोग उसका कंडीशन में गड़बड़ कर देते हैं तो दे मिस. ओके. And when you have simpler functions as compared to if function, it is better to use that. ठीक है? जब complicated conditions हो तब आप if functions यूज करो. Fine? यस सर. Okay. So ये आपको 50 मिला. अब इसका एंड कब होगा? 75. 50 plus 25. 75 में. 25. So that means equals to this plus. Correct? Was my printing machine idle at any point of time? Yes, sir. नहीं प्रिंटिंग मशीन नहीं. प्रिंटिंग मशीन तो आइडल नहीं था ना. यस सर 15 आवर्स. है ना? तो प्रिंटिंग मशीन इधर 15 पे खत्म हुआ, इधर 15 पे चालू हुआ.
अब जब इधर 35 पे खत्म हुआ तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जॉब ले लेगा ना, यस सर। लेने वाला है। सो नेक्स्ट जॉब मतलब कि यही ऊपर का ही फॉर्मूला हम लोग सेम ले सकते हैं। ऊपर का फॉर्मूला क्या था? इक्वल्स टू प्रिंटिंग एट। प्रीवियस, बराबर। So my printing machine is not idle. Now how do I identify whether my printing machine was idle? Equals to मेरा ये स्टार्ट कब हुआ और इसके पहले वाला जॉब एंड कब हुआ, करेक्ट? बराबर ना? यस सर। ओके। अब बाइंडिंग मशीन मेरा आइडल था क्या? इसके पहले वाला जॉब कब खत्म हुआ और ये वाला जॉब कब शुरू हुआ, उससे मालूम पड़ेगा कि वो आइडल था कि नहीं। ये 50 पर खत्म हुआ और 50 पर उसने दूसरा लिया, तो दैट मीन्स इट वाज नॉट आइडल, बराबर ना? यस सर। So that means equals to start minus end of the previous. Was my job waiting at any point of time? यहाँ पर तो वेटिंग था ना, 35 पर खत्म हुआ था प्रिंटिंग, बाइंडिंग के लिए 50 पर चालू हुआ, मतलब 15 मिनट तक बैठा था जॉब तेरा, Right. so that means equals to this 50 minus, correct? Are we logically right? Yes, sir. सर ये लास्ट वाला एक्सप्लेन कीजिए। देख, तेरा जॉब इधर पर वेट कर रहा था क्या? हाँ सर, 15 मिनट्स था ना, 35 पर प्रिंटिंग खत्म हो गया था, बट बाइंडिंग मशीन वाज नॉट अवेलेबल, सो इट हैज टू वेट एंड इट वेटेड टिल 50, यस सर। है ना? तो मतलब कि 35 से लेके 50 तक वो जॉब आइडल था, राइट सर। इसके लिए जब उसका बाइंडिंग स्टार्ट हुआ से लेकर के जब उसका प्रिंटिंग खत्म हुआ था, उतना जो गैप जो था वो आइडल टाइम था। दैट मीन्स जॉब वाज नॉट अटेंडेड बाय एनीबडी, इट वाज waiting for the next resource to be available so that it can start processing, correct? यस सर। अभी 2 लाइन का मैंने किया ना, तो अभी मेरा मालूम है एक्चुअली फॉर्मूला पूरा सेट हो गया है, राइट सर। अब मैं सिर्फ फॉर्मूला को खींच सकता हूं। फिर भी एक दो हम लोग अभी फिर से और करते हैं ताकि दिमाग में एकदम थॉरली बैठ जाए, ओके? चलेगा। ये देख, आई शो यू, अगर मैं इसको ऐसे ही खींचता तो आ जाता था, बट अभी प्रिंटिंग का एंडिंग, अभी नेक्स्ट स्टेज दैट इज जॉब नंबर 4, उसका प्रिंटिंग कब शुरू होगा? जब ये मशीन, प्रिंटिंग वाला मशीन खाली हो जाएगा। प्रिंटिंग वाला मशीन गॉट फ्री एट 35 आफ्टर प्रोसेसिंग द सेकंड जॉब, करेक्ट? 35 पर खाली हुआ तो मतलब वो 35 पर नेक्स्ट प्रिंटिंग शुरू करेगा, और वो कब खत्म करेगा उसका प्रिंटिंग? इक्वल्स टू 35 प्लस 20, 55, करेक्ट? यस सर। अब इसका नेक्स्ट, इसका प्रिंट बाइंडिंग कब शुरू होगा? 75. 75। 75, तो मतलब इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ दिस 75 कॉमा जो उधर पर 55 था, करेक्ट? यस। एंड कब होगा?
this 75 plus 30, correct? बराबर है? Yes, sir. Fine. Was my printing machine idle? देखो No, sir. No, sir. 35 पर खत्म हुआ था, 35 पर वापस चालू हो गया. So that means मेरा printing machine was not idle. So equals to इसका start time minus end time of the previous job. Correct? Yes, sir. Binding machine का सेम वैसे ही equals to binding machine का start time minus binding का end time of the previous job. Correct? Was my job idle? Yes, sir. For 20 minutes. सेकेंड स्टेज का प्रोसेसिंग जब शुरू हुआ और फर्स्ट स्टेज का जब खत्म हुआ था उसके बीच में का जो गैप है दैट इज माय जॉब वेटिंग टाइम. सो इट वुड बी सेकेंड स्टेज का स्टार्ट माइनस फर्स्ट स्टेज का एंड. करेक्ट? यहां तक ओके है? हाँ सर. अभी मैं क्या करता हूं, इसको लिया पूरा नीचे तक खींच लो, इसको लिया पूरा नीचे तक खींच लो, इसको भी पूरा नीचे तक खींच लो. सब बराबर आ रहा है क्या? देखो इसको 0, 15, 15, 35, 35, 55, 55, 75, 175, 175, 255, 255, 345, 345, 410. बराबर कंटिन्यूसली बराबर चल. करेक्ट? और ये वैल्यूज देखो, क्या ये वैल्यू आपकी इससे ज्यादा है क्या? तो स्टार्ट देखो 15, 50 यहाँ पर ज्यादा है, मतलब यहाँ पर इसका जॉब का वेटिंग टाइम आया. करेक्ट? 55, 75 इधर पर भी जॉब वेटिंग टाइम आया. 175, 175 मतलब जॉब वाज नॉट रिक्वायर्ड टू वेट. बट यहाँ पर देखो इसका एंड कब हुआ था? 105 पर. ठीक है? और 175 पर चालू हुआ क्योंकि पहले वाला ही प्रोसेस लेट से हुआ. ओके? Yes, sir. Yes, sir. अब लास्ट वाला देखते हैं. लास्ट वाले के हिसाब से मेरा प्रिंटिंग का मशीन आइडल कितना? 0 दिखा रहा है. करेक्ट है क्या ये? हाँ सर. प्रिंटिंग का मशीन मेरा 410 पे खत्म हो गया था पूरा काम खत्म करके, बट मेरा सब काम खत्म हुआ 460 पे. बराबर? तो मेरा सिस्टम एंड हुआ 460 पे. तो क्या 410 से 460 तक वाज माय मशीन, प्रिंटिंग मशीन सेटिंग आइडल? Yes, sir. सर बट आगे कोई काम भी नहीं था ना. हाँ, आगे कुछ काम नहीं था, तो मतलब वो उतना देर फिर खाली था ना जब तक मैंने पूरा सिस्टम शट डाउन नहीं किया. Yes, sir. Right. सो इसमें मुझे ये जो था इसका आइडल टाइम, उसके साथ में ये 460 में से ये भी मेरे को माइनस करना चाहिए. करेक्ट ना? Yes, sir. प्लस अ गैप ऑफ 460 मेरा इधर पर लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा है, माइनस 410 दैट इज प्रिंटिंग का आइडल. ब्रैकेट क्लोज, एंटर. करेक्ट? 50 मिनट्स एक तरह से देखा जाए तो 50 आवर्स एक तरह से देखा जाए तो आइडल था. बराबर? Yes, sir. व्हाट अबाउट बाइंडिंग?
व्हाट अबाउट उसका right है, बाइंडिंग? उसका राइट है। राइट है, उधर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, व्हाट अबाउट जॉब वेटिंग? वो भी राइट है। है, उधर पे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नाउ लेट अस सी टोटल जो मेरा जॉब पूरा फॉर प्रोसेसिंग ऑल दीज जॉब्स आई रिक्वायर्ड 460 आवर्स। ओके, एंड कितना टाइम आउट ऑफ दिस 460 आवर्स कितना टाइम मेरा प्रिंटिंग मशीन आइडल था? समेशन ऑफ ऑल, करेक्ट ना? सो वही आर्ट इक्वल्स टू डाल देने का। व्हाट अबाउट बाइंडिंग? समेशन ऑफ ऑल, Yes, so alt equals to. What about job idle time? Sir. So be Summation of all. summation of all. So now एक मिनट, हाँ, इनको तीनों को साथ में पकड़ करके जस्ट ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सो दिस टेल्स मी कि जॉब आइडल कितने बार हुआ? 1 2 3 बार, और बाकी टाइम इट वाज डूइंग गुड, एंड टोटल जॉब आइडल टाइम वाज 45, दिस इज 95, दिस इज 50। अब हम लोग एक काम करें क्या, ये तो हम लोगों ने देखा, करेक्ट, पहला वाला। अब यही 641 के लिए चेक करें, सिर्फ अपने को इधर वैल्यू चेंज करनी है, करेक्ट? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो ये अभी एक काम करता हूं, मैं ये पूरा इधर पर लिख लेता हूं। मेरा टोटल जॉब कंप्लीशन, टोटल जॉब कंप्लीशन हुआ मेरा 460 पर, बराबर। फिर प्रिंटिंग मशीन आइडल सब कुछ अगर मैं देखूं तो इट इज 50, 95 एंड देन 45। अब हम लोग ये सीक्वेंस चेंज करते हैं, ये सेकंड सीक्वेंस है ना, उसको लेंगे 641 4 1। देखो मेरा टोटल कंप्लीशन टाइम 460 ही है, प्रिंटिंग मशीन का आइडल टाइम 50 ही है, बाइंडिंग मशीन का आइडल टाइम 95 है, बट व्हाट अबाउट माय जॉब वेटिंग टाइम? इंक्रीज हो गया। It increased by 5. क्लियर है? सो दोनों मेथड से अगर हम कंपेयर, दोनों सीक्वेंस से हम देखें तो ये तो 50 आया, 95, बट दिस वाज 50। अब कौन सा मेथड हम फॉलो करेंगे? कौन सा सीक्वेंस? फर्स्ट वाला सीक्वेंस। फर्स्ट वाला, उसमें आपका जॉब का भी वेटिंग टाइम कम है। क्लियर है? यस सर। ये मेथड ज्यादा आसान है, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक आसान नहीं है। Yes sir. One is to identify the right sequence, and second is to do the time calculation. Now if I have to say what is percentage utilization of my printing machine, so percentage utilization के लिए equals to 50 divided by 460. So हाँ, मतलब इतना टाइम मेरा वेस्टेज गया, करेक्ट है? इतना वेस्टेज है, ये आइडल टाइम है ना, 10% was waste, no sir? 10.8% it was idle, Okay sir. करेक्ट? अब अपने टोटल टाइम से डिवाइड किया है ना सर? हाँ, टोटल टाइम से डिवाइड किया है ना? टोटल टाइम से, ओके। ठीक है।
Yes, sir. लॉजिक क्लियर रहेगा? Yes. सब प्रैक्टिस करेंगे तो और ठीक है, हो जाएगा। अभी काम करते हैं, अभी हम लोग ब्रेक लेते हैं 15 मिनट्स. हाँ, इट्स 15:04, तो 15:05 पकड़ लो. 15:20 पर वी विल ज्वाइन इन अगेन. हाँ, डोंट लॉग आउट. ओके, और तब हम फिर उसको वापस से करते हैं. मतलब इसको वापस से मतलब तब तक में यू कैन जस्ट वर्क इट आउट. ब्रेक ले लो और जल्दी से ब्रेक से जल्दी आकर के जस्ट एक बार वर्कआउट करो, सो दैट इफ यू हैव एनी डाउट्स आई कैन एड्रेस इट इमीडिएटली आफ्टर द ब्रेक. Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलो, बेस्ट ऑफ लक. प्लीज डोंट लॉग आउट, पुट योरसेल्फ ऑन म्यूट, दैट्स इट. Yes, sir. We'll be meeting again at 3:20. Okay, sir.
Can we start? Hello? Yes, sir. Yes. Now, is my screen visible? Yes, sir. ओके, समझ में आ गया क्या? सब क्लियर है अभी? हाँ सर, ये क्लियर है, सम तो क्लियर है। ओके, सो एक तरह से देखा जाए तो अगर मेरे को प्रिंटिंग मशीन का यूटिलाइजेशन की बात करनी है, सो आई कैन से इट इज 1 माइनस, करेक्ट ना? Yes, sir. अब ये भी इनको भी सबको अगर मैं यहाँ पर मैं मान लो इसको लिखता हूं से यूटिलाइजेशन, ठीक है, और इसको मैं ऊपर खींच लेता हूं एंड आई विल मेक इट फॉर से ये मशीन के लिए सब चीज इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग में सबको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देता हूं से दिस बिकम्स this 50 and this 460 is nothing but total time which was taken. तो ये अगर मैं फॉर्मूला को इधर जब ड्रैग भी करूं तो 460 will remain the same, but instead of 50 95 और ऐसे आ जाएगा ये, है ना? सो मैं इसको फ्रीज कर देता हूं using the button F4. If I press F4, dollar symbol automatically appears. Okay, so 89.13 वैसे ही है बराबर, जस्ट पुल किया, सो मेरे को ये भी बराबर आ गया नहीं, हाँ करेक्ट, बराबर ना? आर वी ऑल कंफर्टेबल? फॉर्मूला, हाँ ओके। मैंने इसके लिए जस्ट आपके लिए फॉर्मूला हाईलाइट कर दिया है सो दैट यू कैन सी इट, बराबर। 95 आउट ऑफ 460, सो एक तरह से देखा जाए तो 1 माइनस अगर करेंगे तो दैट विल टेल अस व्हाट इज द परसेंटेज यूटिलाइजेशन. सो परसेंटेज यूटिलाइजेशन in first case for printing machine is 89.13 whereas binding machine is 79.35%. Clear? Yes, sir. सेकंड केस के लिए भी इट वुड बी सेम बिकॉज प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग का जो आइडल टाइम है वो सेम है. अच्छा, Okay, sir. did you guys try to go through whatever this was done? Are you comfortable with the calculations? Yes, sir. Somewhat comfortable. Yes, sir. Somewhat. So और एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं होगा ये थोड़ा. हाँ, ये एक्सेल की वजह से शायद हो सकता है. तुमको कहीं कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या? सर एक्सेल की वजह से आसान लग रहा है, बस थोड़ा मतलब सर बुक में एक दो बार अपने आप करेंगे तो हो जाएगा सर, प्रैक्टिस का ही है, बस सीक्वेंस नहीं आता था कि कहाँ पे कभी क्या किया था, वैसा है. अच्छा अच्छा, ठीक है. हाँ, इसमें आपको दोनों भी तरह से मतलब वो करके देख करके एक बार करना पड़ेगा. अब यही सेम चीज को ना हम लोग फिर से एक बार करेंगे, बट विल बी डूइंग इट फॉर 3 स्टेज नाउ. ओके सर. ओके, 3 स्टेज में ना थोड़ा सा सिर्फ स्टार्टिंग का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, रेस्ट एवरीथिंग वुड बी द सेम. ओके, सो if everybody is comfortable, should we move over to the 3 stage now? Yes, sir. Okay, so
सो आपकी आवाज कट रही है। नामकरण कर देते हैं। सिंगल स्टेज, सीक्वेंसिंग, इसको कॉपी किया इधर पर, I'll put the same and I will make it two-stage sequencing. I have shared the notes also with you. Okay? मैंने उसमें भी कुछ स्टेप्स वगैरह सब कुछ लिखा है, तो एक बार जरा देख लीजिएगा. I hope it would be more helpful. Okay, sir. 3-stage. Now 3-stage में what we are doing is we are taking another example. Okay. Is my screen visible? Yes, sir. Okay. Now here comes the 3-stage. 3-stage में हमने वैसे ही सेम लिया, बट थोड़ा सा अलग कर दिया है आपका इस बार. The 3 stages are printing, binding and then finishing. Finishing में आप कट आउट करके वो सब बराबर शेप वगैरह वो करते हो, है ना? So that is finishing. So printing, binding and finishing. These are the 3 stages which we are going to look at. Okay. अब इसमें हम क्या करते हैं? There is a condition which we need to look at, answer first, check, and then we move on. Okay. And that condition is the minimum of stage 1. तो अभी इसका minimum of stage 1 क्या है? 3. Should be greater than maximum of stage 2. तो stage 2 का maximum क्या है? 5. So this minimum of stage 1 should be greater than maximum of stage 2. This condition is false. यहाँ पर minimum is 3, maximum यहाँ पर is 5. तो ये बराबर नहीं है. So first condition fails. Or second condition is minimum of stage 3, that means third stage. Okay, minimum of stage 3. Ab minimum of stage 3 is what? 5. 5. Should be greater than or equal to maximum of stage 2. So either per maximum is 5. 5. Should be greater than or equal to. That condition is true. Either of the two conditions, उन दोनों में से कोई भी एक भी condition अगर true होगी, so हम इसमें Johnson's rule apply कर सकते हैं. Okay. Yes. Now to apply Johnson's rule, we'll have to convert it into a 2-stage first. So 2-stage कैसे होगा? 2-stage हम इसको A और B को मिला करके पहला एक बनेगा और फिर B और C को मिला करके दूसरा बनेगा. ठीक है? Clear? We'll start doing it. मैं जस्ट ये कॉपी करके I am putting it there on the Excel sheet. सर 2-stage में हमेशा A plus B and B plus C यही सीक्वेंस रहेगा ना, लाइक चेंज नहीं होगा सीक्वेंस. First stage plus second stage and second stage plus third stage. ओके सर. ठीक है? यस सर. अभी let me go back to my Excel sheet. यहाँ पर वो वैल्यू पेस्ट करते हैं. ज्यादा बड़ा आ गया. ये अक्सर प्रोसेसिंग टाइम ये पूरा का पूरा
Now I would request you all to copy this. Is it visible clearly? Yes, sir. Just wait 2 minutes. Ah. Okay, sir. Done? सर आप म्यूट पे हो. Am I audible? Yes, sir. Can we move on? सभी लोगों ने कर लिया ना इतना? Yes, sir. Just a second. Just a second. Okay. Now, first thing is we will reduce it. So reduction में हम क्या करेंगे? पहले इसको 2 stage में convert करेंगे. So I will just copy this entire stuff and I am pasting it here. उसके बाद में पहला would be A plus B and the second would be B plus C. Correct? So A plus B मतलब क्या करूंगा मैं? Equals to
this plus A plus B, correct? And if I pull it, वो बाकी केस के लिए भी अपने आप ही कर देता है. लेट्स चेक. किया क्या उसने बराबर 2 के लिए? बराबर है ना? हेलो, हाँ सर, राइट है, राइट. हाँ सर बराबर. ठीक है. सो इस तरह से आप जस्ट एक बार चेक कर लेना. लेट्स डू इट फॉर B plus C also equals to, this is your B plus C for job 1. Okay, and we'll just pull it across for all the other jobs. ठीक है. तो सबको थोड़ा सा सेंट्रल लाइन कर देते हैं, सो इट विल गुड. Fine. Now we will start making the sequence. Say पॉसिबिलिटी है अपने को मल्टीपल सीक्वेंसेस मिलेंगे. ठीक है. तो विल सी. पहला सीक्वेंस देखते हैं. तो मैंने 7 ब्लॉक्स बना लिए. And we will start putting in the numbers. Now out of this two stage matrix, इसमें से हम देखेंगे कि लीस्ट वैल्यू कौन सी है. लीस्ट वैल्यू कौन सी है अपनी? 5. 5. तो 5 इधर भी है, 5 इधर भी है. करेक्ट. सो अगेन दोनों भी स्टेज में है. फर्स्ट स्टेज में है, सो दैट मींस विल बी शेड्यूलिंग इट, दैट मींस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है. सो अभी मेरे पास में दोनों भी 5 है, सो आई कैन शेड्यूल आइदर 3 और 7 अर्ली. तो अगर मैं मान लो 3 इधर पर डालता हूं तो मेरे पास में दूसरा ऑप्शन 7 का. ठीक है. अगर 3 मैंने पहले डाला तो दूसरा फिर इधर पर 7 आएगा, और अगर पहले मैंने 7 डाला तो इधर पर 3 आएगा. करेक्ट. ओके. इधर तक. यस सर. हेलो. हाँ. सो इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमको पता रहे कि भाई हम वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर इट अगेन. डन. यस सर. What is the next list value? 8. 8. And at job number 4, 1. Correct? Right sir. Either of them. बराबर है. So Yes sir. मेरे पास अगर मैं अगेन ये दोनों भी सेकंड स्टेज पर है. सेकंड स्टेज पर है मतलब वी विल बी शेड्यूलिंग इट एट द एंड. करेक्ट. सो इफ आई पुट 4 हियर, then 1 will be the second least, or I can schedule 4 here and 1 could be the last for 3 7, और उसी तरह से it can be for 7 3 also. बराबर ना? Yes sir. तो 3 7 में ये 2 पॉसिबिलिटी है, और 7 3 में भी वैसी ही 2 पॉसिबिलिटी आएगी. करेक्ट. 1 हो सकता है, 4
1 हो सकता है, 4 हो सकता है. At the same time, you can have 4 as well as 1. These are the possible combinations that we are looking at. Normally, during examination, you don't need to identify so many combinations. You can just go ahead with 1. Okay. Yes sir. इसका मतलब 2 कॉम्बिनेशन ना हम लोग से नहीं, यहाँ पर 37 का the number of combinations that we are getting here right now is 4. One is ये 37, उसमें लास्ट में 1 4 है, 4 1 है. सेकंड इज 7 3, उसमें भी लास्ट में 1 4 है, 4 1 है. यस सर. So if we look at, as of now we have 4 combinations. You can choose either one and go ahead. But practically हम क्या करते हैं, we check out for all, then whichever is the best, that is what we choose. Okay. Now, since I have already taken 1 and 4, let me highlight them so that I don't consider them again. They will be out of my consideration now. Correct? Now I am left out with 3 jobs, 2, 5 and 6. अब इसमें से सबसे least वाला कौन सा है? 2. 2. Because it has value as 9. Correct? Hello? Yes sir. sir. हाँ. So 9 कहाँ पर है? It is there at the first stage. So where am I going to schedule it? Left hand side. Left hand side. So I will schedule it here. Correct? So हर एक इसमें आप जितने भी कॉम्बिनेशन है सब में देखा जाए तो आप वहीं पर शेड्यूल करोगे. फाइन. Yes sir. Now since that is taken care of, just highlight it. Now we are left out with 5 and 6. अब इसमें it is available In both. 10 सभी तरफ है, कहीं भी शेड्यूल कर सकते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर भी. करेक्ट. तो मतलब ये जो इतने कॉम्बिनेशन 4 जो आए हैं, इसका 2 कॉम्बिनेशन और आ जाएगा, तो मतलब एक तरह से 8 कॉम्बिनेशंस. क्रेजी नहीं? बहुत ज्यादा है सर. हाँ सर. हाँ. तो आप उतना कंसिडर करना है करो, नहीं तो यू कैन जस्ट सिंपली, ये 10 इधर पर पहले आ रहा है. हाँ. तो आप सीधा इधर पर 6 वाला आप डाल दीजिए फॉर ऑल ऑफ देम. And then you are left out with only just 1, and that is 5. ठीक है. Just आपको जब मैं that time I will do it for all so that it helps you in understanding better. Fine. So now you have so many sequences. इतने सारे possible sequences हैं. You can take either of them and just work around. For these machines, how they are actually performing, whether they are having idle time or not. तो हम क्या करेंगे, अभी पहले के ही जैसे टेबल बनाना पड़ेगा. करेक्ट. We'll make the Yes sir. similar table, but now we will have that table for 3 stages. One is for printing, second is for binding and finishing. Correct. Yes sir. और ये सर ये 8 So- के 8 सीक्वेंस लेने हैं.
नहीं नहीं, 8 के 8 नहीं लेना है, ये सिर्फ ऐसी टेस्टिंग के लिए आपकी आप मतलब गलती से भी एग्जाम में प्लीज डोंट डू एनीथिंग लाइक दिस. ओके, यू विल ओनली जस्ट बी लूजिंग टाइम. अगर सिर्फ एक ही लेकर के करोगे, सिंस आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू, इट इज टेकिंग टाइम. नहीं तो अगर सिर्फ एक ही लेके करोगे ना तो हार्डली विद इन 5 minutes यू विल बी एबल टू फिनिश दिस न्यूमेरिकल. सब उधर मेंशन करना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस हम लोग ले रहे हैं. हाँ हाँ. ओके. Okay. And whatever sequence that you take it, I tell you what I do at the time of assessing your paper. आपने कुछ भी लॉजिक कुछ और दूसरा भी लगाया ना, तो still I will keep my Excel sheet ready, and the minute I come across your logic, I will put it there and I will check. मुझे तो सिर्फ सीक्वेंस चेंज करके देखना है ना. So immediately I will come to know whether we are getting the right thing or not. Just a minute. Okay, clear. So अभी हम कैसे करेंगे? We will start with job. पहला होगा printing start, printing process, printing end. Similarly, binding start, binding process, binding end, then finishing start, finishing process, finishing and उसके बाद में तीनों मशीन्स का आइडल टाइम. सो प्रिंटिंग आइडल टाइम, एक्चुअली प्रिंटिंग मशीन आइडल टाइम होगा. फाइन. फिर आफ्टर प्रिंटिंग बाइंडिंग मशीन आइडल टाइम, एंड देन फिनिशिंग मशीन आइडल टाइम. उसके बाद में जॉब वेटिंग. करेक्ट. डन. Sir, just 2 minutes. अपना भी भरा कि नहीं? अपना भरा?
हो गया सर. Done? Yes sir. Yes, sir. Okay. Now let's move forward. अभी हम वापस से सारा वो कैलकुलेशन शुरू करेंगे. So let us take only just one sequence, this one, and we will do the time calculations only for this one. Okay? कैसे? Paste as transpose. Correct? Now my start time would be, I'll be starting everything at time t equals to 0. 0. Printing process को time कितना लगेगा? For job 3, 4. this is my job 3. Printing process will take 4 4. hours. Correct? So कैसे वो कैसे मिलेगा? If I have to use formula, H lookup. sorry, H lookup. H lookup equals to H lookup, और नहीं तो पेन पेपर लेके कर रहे होंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं. H lookup what value? H lookup this. ओके. अभी मैं एक और चीज कर सकता हूँ. मैं अगर इसको पहले से इस तरह से करके ले लूँ ना कि कॉपी करके डायरेक्ट डाल दूं तो मेरे लिए इजी हो सकता है बाद में आगे के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर मुझे 3 बार, एक बार प्रिंटिंग के लिए देखना है, एक बार बाइंडिंग के लिए देखना है, एक बार फिनिशिंग के लिए देखना है. ठीक है, बट स्टिल लेट अस सी, वी विल डेवलप द फॉर्मूला फर्दर. ओके. H लुकअप वैल्यू हमने दिया. देन दिस इज माय टेबल अरे. We will freeze it using F4, comma, which row number we have to check? 1. Second. 2. Sorry, second. Row Sorry, number 2. It will automatically compare on row number 1, और रो नंबर 1 में उसको सेम वैल्यू जैसे मिलेगी वो उसमें से फिर जो नेक्स्ट जो भी आपने बताया उस रो से वैल्यू पिक करेगा. ओके. सो इट वी वांट हिम टू पिक अप वैल्यू फ्रॉम रो नंबर 2. Should it be an exact or approximate match? Exact match. Exact value. It has to be an exact match. So that's all. ये अपने को ये वाला बराबर आ गया. Fine. Now, Yes, sir. what about your printing end time? सर मेरा 8 आ रहा है. एक मिनट सर, फॉर्मूला पर दिखा ही ना फिर से कुछ. हाँ. गलती कर दी शायद. B1 to H4. हाँ सर वही लिया, पर मेरे शायद से मेरा 8 आ रहा है, पता नहीं. 8 आ रहा है. I think you have selected the first. लिखने में से गड़बड़ किया रहेगा. हाँ सर सॉरी मैंने एक्चुअली वो जॉब सीक्वेंस में गलती कर दी सर. यस राइट. हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला कभी गलत नहीं होता. मतलब वो हमने जैसा उसको डिफाइन ठीक वैल्यू पुट करेगा. फाइन. यस सर. Can we move ahead? यस सर. यस. Okay. So your printing end time would be what? 0 plus 4, correct? Equals to. Now, when will your binding start? When printing ends. So equals to this value. What will be your binding process time? Now, if I use, क्योंकि HLU का वाला फॉर्मूला मैंने इधर प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए किया ही है, अगर मैं इसकी कॉपी करके if I put here बाइंडिंग प्रोसेस में, it's for job number 3, it cannot be 9. There is something mistake. So मुझे वो एक्चुअली जॉब नंबर 4 देख रहा है, बट वो उसको एक्चुअली इसी को देखना चाहिए था. सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैनुअली उसको ड्रैग करूं, या फिर जब मैंने फॉर्मूला इधर पर जब मैंने फॉर्मूला सेट किया था ना, वो टाइम पर ही इफ आई फ्रीज द कॉलम, ओके, इफ आई फ्रीज द कॉलम,
if I put a dollar symbol here, and when I copy this formula from here to here, now it is giving me same value. Why? Because next time for binding, I have to pull the value from the third row. Correct? And it is showing second row. So बस सिर्फ इसको अपने को change करना पड़ेगा. Rest everything it has automatically taken. Done? सर ये वाला फिर से बताएंगे. हाँ. मैं फिर से बताता हूँ आपको. अभी पहले क्या था कि ये यहाँ पर ना ये रिलेटिव रेफरेंसिंग था. दैट मीन्स इट विल रेफर टू, अभी जैसे अगर मैंने ये फॉर्मूला इधर पर से कैसा 1 सेल 2 सेल 2 सेल छोड़ के उधर का रेफर कर रहा है. सो इफ आई कॉपी दिस फॉर्मूला and I paste it here at the place of binding process, so it starts referring 1 to either wala value, but I wanted it to refer to this value only. So what do we do is, when we are using this formula, that time let me freeze this column, so this column will not change even when I copy the formula at some other location. So I'll put a dollar symbol here. Okay, and now I will copy the Control C and I go and paste it here. Even if you press enter, it gets okay. So I have pasted it there. Now if I check the formula, so it is referring to this cell and this table, but it is referring to second row only. Tabki, when I am talking about binding process will is actually indicated in the third row, first row, second row, and third row. So I need to change this from 2 to 3, and am I getting the right value now? For job number 3, binding process will take 1 hour. Yes, sir, it's correct now. है ना? गुड. सर वो लास्ट सम जैसा भी कर सकते हैं ना हम लोग, अगर ये नहीं समझा तो. हाँ, ऐसा करने का वैसा भी कर सकते हैं. बट देखो, why am I actually telling you all these things also? There are multiple reasons behind. One, आपका जब आप डेटा एनालिसिस के लिए जाओगे और उधर पे बहुत सारा डेटा आ जाएगा ना, तब आपको ये सब डॉलर सिंबल्स और ये सब की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी. That is the time when you cannot use that earlier formula. Then you would like to just set up formula at one place and then just pull it, drag it across. Okay. So आप लोगों को धीरे धीरे मैं जस्ट एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं ताकि दोनों भी चीज हो जाए. अपना ऑपरेशंस मैनेजमेंट भी हो जाए, एट द सेम टाइम आपका एक्सेल भी हो जाए. डन? Yes, sir. When will your binding process end now for job 3? After 1 hour. It is going to, it will start at 4. It will take 1 hour for processing, so 4 plus 1, it will end at 5. Or rather, I can just simply say equals to start plus the processing time. Correct? Yes, sir. Once binding is over, your job 3 will move over to finishing. Okay? So it will start at this time, the minute your binding gets over. Correct?
Now again for finishing process के लिए कितना टाइम लगेगा for job 3? 7 hours. Okay, so now how do I do it? Equals to H lookup, correct na? Yes, sir. Yes, है sir. ना? और अदर वे इज जो मैंने बाइंडिंग प्रोसेस का मैंने लिया था उसी को कॉपी किया, आई पेस्ट इट हियर एंड आई मेक Row इट number 4 now. इंस्टेड ऑफ 3 आई विल मेक इट रो नंबर 4. डन. Yes, sir. And I press enter. I'm getting 7. Is that right? Yes, sir. Now when will your finishing end? 12 hours. 5 Start. plus 7. Plus processing. So that is 12. Is your printing machine idle in the initial stages? No. So equals, वो जब start हो रहा है तभी का ही हम ले लेंगे. We'll just keep it there only. Okay. What about binding machine? No idle time. 4 वो seconds. 4 तब seconds. तक idle था. So 4. What about finishing machine? 4 plus 5, 9. Correct. Yes, sir. Is your job waiting anywhere? Job waiting कब होगा? Between Sir, the two. finishing machine idle 9 आएगा कि 5 आएगा? कौन सा? Finishing machine. हाँ. Finishing machine start कब हो रहा है? 5 ना? 5 और printing is 4 और binding process 5 सेकंड तो 9 होगा ना? हाँ, 0 start हुआ. Binding started at 4. Yes, sir. Clear? Yes, sir. No. Is my job waiting anywhere between the stages? तो उसको चेक करने के लिए equals to मेरा finishing start minus binding end plus binding start minus printing end. Correct ना? सर रिपीट कर सकते हो फॉर्मूला? हाँ, ये देखिए मेरा जॉब का वेटिंग कब होगा? बिटवीन द स्टेजेस. दैट मीन्स बिटवीन स्टेज 1 and 2 and between stage 2 and 3. So 2 and 3 का start of the third stage minus the end of the second stage will tell me the time my job was waiting. Correct? Got it, sir. Now. Huh? Sorry? समझ गया सर. Similarly, you will add the gap between the second and the first stage. That means the start of the second stage and end of the first stage. Fine. Now let us look at the second iteration. Now for the second job, when will the printing start for job 7? After 4. After 4. So equals to जैसे ही पहला वाला खत्म हुआ, it will take it up. Correct? What about your processing? ऊपर का ही फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं. करेक्ट है ना? Yes, sir. सो कंट्रोल डी से ऊपर का वैल्यू डुप्लीकेट होता है, मतलब उधर का फॉर्मूला जो भी रहेगा वो उधर आ जाता है. लुक एट दिस. H lookup for job number 7 in the above table.
pull value from the second row. Second row में क्या है? Printing, comma, false. Okay. Yes, sir. Now, when will this end? Start 7. processing. Correct? Yes. Now, what about the second stage? When will the second stage start for Maximum the? of 4 or 7. 7. Sorry, Maximum of 4 or 7. 7. it would be maximum of 4 or 7. nahi, maximum of 5 and 7. Why? Oh, 5 and 7. Finished. है ना? Maximum of binding का end time of the previous job minus minus नहीं, maximum of the previous job and ending of the first stage. Correct? बराबर value आया? Yes, sir. 7 आया. Now, what will happen about the binding process? क्या करेंगे? Formula copy. सीधा ऊपर का फॉर्मूला ही कॉपी कर लेते हैं, तो कंट्रोल डी से ऊपर का वैल्यू डुप्लीकेट होता है. Yes, sir. 2 आ रहा है, right? सो ये आ गया. व्हाट अबाउट एंडिंग? 9. 7 + 2 9, मतलब ऊपर का ही फॉर्मूला. डन. Yes, sir. Now coming to the next one. Finishing process कब start होगा? 12. Maximum of finishing end and binding end. Very good. Equals to maximum of finishing end and binding end. Correct? अब finishing process कितना लगेगा? So, वो ड्रैग डाउन करेंगे फॉर्मूला तो आ जाएगा. ऊपर का फॉर्मूला सीधा ले लेंगे, बट ऊपर के फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ है अपने को नहीं, बराबर है. सो फॉर 7, जॉब नंबर 7, $99. 12 + 7. सेकंड बराबर है क्या? ये हाँ सर, फिनिशिंग 7 ही आ रहा है ना. बराबर है. सो Yes, sir. क्या आएगा? स्टार्ट प्लस प्रोसेसिंग. तो ऊपर का ही फॉर्मूला हम कॉपी करेंगे तो हो जाएगा. करेक्ट? Yes, sir. ओके. नाउ प्रिंटिंग मशीन का आइडल. सर 4 है ना. नहीं सर, प्रिंटिंग का तो कुछ आइडिया नहीं रहेगा. देयर इज हाँ नो ये आएगा. printing for the printing machine. Correct? राइट. Yes, sir. Because it is calculated as when it started and when the previous process got over. ठीक है? Any doubts here? नो. अच्छा. What about binding machine? 2 hours. 2 आएगा. Same as equals to binding start minus binding end.
इसका क्या, इज दिस राइट? Yes, sir. 2 आ रहा है. Okay. Now coming to finishing. 0. ये 0 करेंगे 0 आ रहा है. कितना आएगा? 0 finishing start 12 minus 10 12. Finishing machine idle time would be finishing का start minus finishing का 0. What about your job? Job waiting. Was our job also waiting somewhere? Yes, sir. 3 seconds. कहाँ पर? Between finishing and देखिए ये एंड हुआ, ये स्टार्ट हुआ 7 Finishing and 7 binding के 10 बीच में 9 and 12. तो यहाँ पर there was my job waiting. What about my job waiting? टोटल कितना आएगा? Waiting between first and second stage and waiting between second and third stage. So that means it would be equals to waiting between second and first stage plus waiting between waiting between the third stage and second stage. बराबर इतना ही है? Yes, sir. हाँ, 3 sir. है. 8. है ना? यहाँ पर तो there is no waiting 7 and 7, but here 9 and 12. So that means 3 hours waiting. Correct? Hello. Right, sir. yes, sir. Now, can I pull this formula all across? नीचे तक पूरा? Yes, sir. ले सकते हैं. Yes, sir. I'll just pull it. क्या हो रहा है? Fine. अब इसमें only just for the last row we need to check. Rest everything will come out well. एक बार चेक कर सकते हो स्टिल, नहीं तो मैनुअली करते जाएंगे तो हर एक को एक एक बराबर देख के करना पड़ेगा. So at the last row, what about my printing machine idle time? 47 को उसका प्रिंटिंग का काम खत्म हो गया था, and since then till the end of the system, end of all the processes, it was still waiting. Correct? Right, sir. So let me go to this and I will add. क्या ऐड करेंगे? When the entire system got over minus when the printing machine completed their tasks. बराबर? हाँ. हाँ? Yes, 8 आ रहा है, sir. Right. कहीं कुछ गड़बड़ किया क्या? हाँ 80 है, बराबर. क्लियर? Yes. Yes, sir. अब इसके बाद में let us look at binding machine. Binding machine is only just looking at
this, but in reality बाइंडिंग का एंड से लेकर के पूरा प्रोसेस एंड तक वो खाली बैठा है. करेक्ट? So that also needs to be added. Yes, sir. 55 minus. बराबर ना? तो Yes, sir. नेक्स्ट स्टेज का कैसे करेंगे? प्लस 55. 55 minus 50. मेरा टोटल प्रोसेस एंड माइनस माई binding it. एंड. So that gives me the total for the binding. Let us look at finishing. Finishing में कुछ करने की जरूरत है क्या? No, sir. So that is okay. What about your job waiting? What about your job waiting? No change, sir. तो No. वापस से आप बस उसी तरह से देखोगे कि दो प्रोसेसेस के बीच में वेट कर रहा है क्या, बट वैसा कहीं पर भी नहीं है. ओके, लुक एट दिस. बिटवीन प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग नो वेटिंग, बिटवीन बाइंडिंग एंड फिनिशिंग नो वेटिंग. तो ये जो वैल्यू है ये बराबर है. फाइन. सर जॉब वेटिंग में हम लोग ये बोलते हैं ना कि एक जॉब जो रहता है वो कितना टाइम वेट करे, वैसा लॉजिक है ना? हाँ, हाँ, ओके ओके. एक जॉब को कहीं पर बीच में वेट करना पड़ता है क्या? इज द जॉब लेफ्ट आउट अनअटेंडेड? ओके ठीक सर. है. यस सर. अब ये मुझे मिला. सो दिस टेल्स मी ये जो फर्स्ट सीक्वेंस है उसके लिए टोटल ड्यूरेशन, जॉब, जॉब्स, कंप्लीशन टाइम, पूरा जॉब्स का कंप्लीशन टाइम फर्स्ट सीक्वेंस के लिए इट इज द मैक्सिमम, दैट इज दिस 55. व्हाट अबाउट माय अदर वैल्यूज? तो मेरे को टोटल करके देखना पड़ेगा, बराबर ना? इक्वल्स टू सम ऑफ द अबव वैल्यूज. परफेक्ट. Yes. Can I just simply pull it across? हर एक के लिए आ गया? बराबर है? हाँ सर. Yes, sir. तो मैं ये इधर लिख करके लिया. It is 8, 34, 7 and 15. So I will just copy this and I will paste it as values. क्लियर? ऐसे हम बाकी का भी चाहिए तो चेक कर सकते हैं अपने को अभी, क्योंकि अपने पास में अभी सब फॉर्मूला सब कुछ सेट हो गया है. ऑल वी नीड टू डू इज जस्ट कॉपी एंड सर अभी से सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा ना? हाँ, हमें सिर्फ सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा. अभी बाकी सब अपने आप बड़े आराम से आ जाएगा. सी सेम वैल्यू है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है 3726541 में के लिए भी. सो अगर मैं इसको एज इट इज बस डुप्लीकेट कर दूं दैट इज गुड इनफ. लेट अस लुक एट द नेक्स्ट वन. तो एट 34, 7, 16 ये सब कुछ सेम है. ओनली दिस वैल्यू इज डिफरेंट.
Can we see the difference? Total project duration is not changing, but ये change हो रहा है, देखिए. Correct? So though the total project duration is same, okay, my job idle time is least in this case. बाकी भी check करना पड़ेगा. When we are actually looking at practical solutions, that is the time when we will check for all the possible combinations. But for examination purpose, only one is good enough. Yes, sir. Done? इससे sir. एक चीज और क्लियर हो जाती है. आप जो भी कुछ मतलब ये करते हो, the only thing that is going to change is your capacity utilization and the job waiting time. But total project duration will still remain the same irrespective of which optimal sequence you take. ठीक है? Yes, sir. Presentation ready है लोगों का? This was the last numerical for this topic. With this, the topic is over.